We have 1.5 million people with spinal cord injury in India, Oh and my I God. say counting. और मैं ना बहुत ही रिसर्च करती हूँ। जब भी मैं एक फोन कॉल करती हूँ वो हमारे फ्रेंड के साथ सब कुछ पूछ लेती हूँ, सब कुछ पूछ लेती हूँ। उनको पता भी नहीं चलता है कि ये रिसर्च हो गया सो है। मुझे बताएं, आप ये सब करने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। एक्टिविटी के बारे में, सो व्हाट डू यू थिंक इंडिपेंडेंस इज फॉर यू? To move out of my comfort zone, to keep doing new experiences which I've never done before. I think what Nina Foundation does is give hope, hope to live. Flying is seen as a way of thinking. You have to think of yourself as a creature of total freedom. You have to think you are free from all rules in your mind where it all happens. Now you can fly at the speed of your mind, unlimited. हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग विद डिसेबिलिटी के ऊपर। आज की स्टोरी मेरी थीम से कंप्लीटली रिलेट करती है, क्योंकि आज की स्टोरी है केतना मेहता मैम की, जिन्होंने 1995 में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद अपनी लाइफ का मोटो ही बना लिया है कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स को किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाएंगी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन नीना फाउंडेशन इसी मुहिम के ऊपर लगी हुई है कि जब कभी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो ये अपने रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस के साथ उनके पास पहुंचे, ताकि वो पर्सन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ और एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को लीड करे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, खुश रखे और एक खुशनुमा जिंदगी बनाए। केतना मेहता मैम को इस वीडियो के अंदर मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर मेरे इस चैनल पे ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो ये सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ऐसा लोगो और ऐसा एक बैकग्राउंड मेरे फेस के पीछे होना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच मैम। और अब हम सब उन्हें वेलकम करेंगे मेरे इस शो पे। चलिए मेरे साथ। Thank you, thank you, thank you. Namaste, and Anita, you rock. You are the Iron Lady, and you are the only one I know in this universe जो people with disabilities को गाड़ी चलाना सिखाते, and I think this is the biggest form of freedom. थैंक यू सो Especially मच। being a woman, I'm so proud of you. Congratulations, and I love your title of your show, On My Own. थैंक यू। एंड मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि केतना मैम को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, और मैं सबसे पहले आपको मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपको केविन केयर अवार्ड मिला है, और दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडिया, जिसको जो डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, डिसेबल्ड होने के साथ में, और ये अवार्ड उसका एक सिंबल है कि आपने एक यू हैव एक्चुअली गॉन you have taken a long route, and finally this award is it's a significance of what your work is, and your dedication, determination, your grit and your perseverance. मैं बोलती हूँ ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, सो आई टेल माय टीम आई कैन हैंग माय बूट्स। नो। ये केविन केयर अवार्ड्स जो हैं, केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स काफी सालों से इंडिया में पॉपुलर हैं। सो अभी कोशिश करूंगी कि अगले साल मुझे मिल जाए। मैं बहुत जल्दी रिटायर होना चाहती हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गई। नहीं, आपको कोई भी रिटायर होने नहीं देगा। आपकी तभी शुरुआत हुई है, जर्नी हैज जस्ट बिगन। Thank you, ma'am. And with your blessings, I'm sure that it is going to be remarkable. This journey which I am now sailing through, it's going to be remarkable. And I need your guidance all the time. God bless you, Anita. You are rocking. You are the Iron Lady, and you will move mountains. I can assure you that. थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी हम आपके बारे में बात करेंगे। आपने जो मैंने अभी केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स का एक्चुअली वीडियो देखा है आपके इस जस्ट शो को रिकॉर्ड करने के पहले,
सो काफी सारी चीजें मुझे पता चली हैं उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि आप एक एडवेंचरस पर्सन हैं, और आपका एक्सीडेंट भी एक एडवेंचर स्पोर्ट करते हुए हुआ। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एक्सीडेंट किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट के या कोई रोड एक्सीडेंट पे होता है, मतलब रोड पे होता है, तो वापस कम बैक करने में कितना टाइम आपको लगा आपके एक्सीडेंट की? मेरे को आई नो ये थोड़ा सा रिविजिट करने वाली बात है, आपको याद आएगी पुरानी चीजें, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आप बताएं कि वो, क्योंकि मैं एक एडवेंचरस पर्सन हूँ, मैं इंडिया की पहली फीमेल हूँ, डिसेबल्ड फीमेल जिसने स्काई डाइविंग किया है। सो आपने पैराग्लाइडिंग किया है। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में आपकी एडवेंचरस लाइफ आज कैसे चल रही है, और कम बैक कैसे किया आपने, वापस लाइक जर्नी को नॉर्मलाइज कैसे किया? So, academically, I was top league, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट जो मुंबई की प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ की मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मेरे नोट्स मेरे फ्रेंड्स लेकर जाते थे, दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिडंट हैव डिजिटल एरा। बालों से पता चलता है ना, बहुत सालों पहले। And by the time I was 30, I had decided that I want to strike on my own. And I set up my own management consultancy with, UBIC consultancy, market research projects, and was doing that. But I had already set my mind saying that there will be a work-life balance. And we will not wait till we retire to do enjoy whatever we like to do. And I would do all these activities. And in fact, I was the first one, along with a very senior Dr. Anita, who's my mentor also. I have conducted training programs with him, management training. I came up with this idea about an outbound program for the executives, taking them in the wilderness and teaching them, you know, how to take decisions, leadership skills वगैरह। एंड ये रॉक क्लाइंबिंग किया था, कमांडो ब्रिज क्रॉसिंग, चिमनी क्रॉसिंग। Oh, I don't know how I did that, but I did. And all that I done. And when I had this practice going, I got to know, because I have been with the Times of India. That was my first job. And काफी फ्रेंड्स थे, तो एक ने बताया कि पैराग्लाइडिंग कैंप फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई आया है। And I said, wow, got to do this. So it was a weekend camp. Saturday, Sunday जाना रहता था. Saturday go in the morning, come back. It was the outskirts of Mumbai. It was in the month of Jan and Feb. And I was doing that now. 12th of Feb 95 was my last flight. And the thermal in the air, like अभी जैसे हवा चल रही है, you can hear my chimes, I think. वैसे the breeze was also quite heavy, and I took off from the hill with my glider, and I crash landed. हम्म। Uh, Having doctors in my family, my elder sister, Dr. Neena Doshi, and my brother-in-law, Dr. Himanshu Doshi, being doctors, और ऐसा हमारा environment घर पे भी ऐसा था कि we learn everything together. So she would talk about her management, I would talk about my work and management, etc. Homeopathy, she was a homeopathy doctor. And my brother Dhaval would speak about advertising, because he's from the space of advertising. And ऐसे सब चलता रहता। So we knew that sense came in when I felt that I lost all sensation below my waist. I was conscious, but I knew something had happened. I was actually masterminding them in terms of kya karna hai. हम्म। Okay. And because that place was away, quite away, I would take an hour to reach there. Uh, the adventure sport, paragliding, resulted in a spinal cord injury. हम्म। उसके बाद in 12th Feb 1995, I was 32 years of age. There was nothing, and yet there is nothing in India to do with spinal cord injury rehabilitation. Um, लेकिन एक एडवेंचर स्पिरिट जो मेरे में अब भी है, and I think that spirit
is in you as well. And I think this is the spirit which can allow us to break all barriers, to move mountains, and to climb every hill figuratively, you know, because for me, the adventure is different. The adventure is more of जो एक वेरी रिसोर्स पुअर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड रूरल एरिया में उसको मैं घर से कैसे बाहर निकालूं, हमारी टीम कैसे निकाले, उस तरह का ही एडवेंचर है. सो यूजिंग अ मैनेजमेंट नॉलेज to change the landscape of a country. When I did my PhD, I never realized, the PhD is in the space of um, rehabilitation, healthcare rehabilitation management. So, yeah, the adventure continues. सो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपने पीएचडी करा है उसका क्या टॉपिक था, क्योंकि आप अभी रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हो, और आपने कब करी और हाउ वाज दैट जर्नी? बिकॉज आई नो पीएचडी एक लोन लोन सम जर्नी होती है, और उसको करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो हमारे में एक्चुअली काफी सिमिलैरिटीज हैं. सो हम एडवेंचर पसंद करते हैं, और हम एडवेंचर के अंदर एक और जो जर्नी सिमिलर हमारी रही है वो पीएचडी की जर्नी रही है. सो आई नो इट्स नॉट दैट इजी, पर आपने उस पर्टिकुलर जर्नी में क्या तो टॉपिक चूज किया, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, और आज उसके आउटकम्स को आप नीना फाउंडेशन में कैसे यूज कर रहे हैं? Fantastic question. I love this question. Nobody's asked me this question before. Thank you, Anita. Yes, our lives resonate. माई Uh, प्लेजर. yeah, thank you. Our lives do resonate. So, I had already enrolled for my PhD before my accident at my alma mater, Jamna Lal Bajaj Institute. And I was heavily into the space of customer service, customer satisfaction, service excellence, etc. When this happened, I went back to my college. And it was already like 90 because 2 years it took me for my rehab. सब कुछ घर पे करना पड़ा था क्योंकि अब तक यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रिहैब सेंटर नहीं है. And when I got this opportunity to revisit my topic, I decided why not take a live topic, something which is so real in terms of what is happening with us and with so many others. So this topic, the new topic that I selected, I am the first woman uh, doing and conducting this PhD on this topic for the first time. Okay, so my topic was market potential study for a world-class spinal cord injury rehabilitation center in Mumbai. Okay. And it was in the space of healthcare rehabilitation center. Anita, not a shred of research, not a bit of statistic, nothing from India. I visited libraries because in 2003 I started this, right? And there was no digitalization of libraries and the EBSCOs of the world that is, available on our laptops. And I went, I visited, and I'm so happy that I visited All India Institute of Physical Medicine and Research. I visited ISIC, Sign Hospital, nothing at all. And God bless Dr. Chabra. Now he's with Balaji Action Hospital in Delhi. And he turned out to be my mentor, and he's connected me to, the entire space internationally. And I got this figure because you know that to do a PhD thesis, we need numbers. And I wanted to know how many persons with spinal cord injury are there in India at that point of time. Without that, just my literature review, etc., wouldn't have helped. My sample size wouldn't have helped. So I met Dr. Patrick Kluger of Germany,
हम्म. and he happened to come to Mumbai, and my brother came along with me, and we went and met him in his hotel room at the Trident, and I asked him a lot of questions. You know how we are researchers, questions are more. You answer, and I have 10 more questions for you. And I asked him that how do you do this in uh, Europe? And he gave me a formula. He said we set up 20 per million population is how we break, you assess the number of people with spinal cord injury. Okay. And I use that same figure. Hmm. Okay, 20 per million. But I know this is bigger because we are uh, 1 billion, Hmm. people of 1 billion plus. Hmm. And uh, we know that a lot of people drive without a license. You would know, Yeah. yes. And uh, also, uh, there are youngsters in the villages, even in the cities, towns, they just ride two-wheelers from one place to the other place, saying no helmet, nothing. And we know how things happen. Hmm. And I along with Dr. Chabra, I just reached out to everyone, and now we have a figure. And Hmm. it is all thanks to the PhD and Anina Foundation campaigns. Hmm. We have 1.5 million people with spinal cord injury in India, Oh and my I God. say counting. Okay. Because we have a first helpline. I set up the first helpline for spinal cord injury. Hmm. And that helpline is with me. Hmm. Okay. So we know when there are new cases and they have no wherewithal about what to do, because, rehabilitation is something unknown. True. So, so this is my PhD, and it was an exciting journey. I connected with so many people. Yeah. So here I would like to say my husband is a person with a spinal cord injury. So when I learned about his journey, he met with an accident in 1997. And then that time, his parents were not aware of any kind of rehabilitation center. Somebody suggested something, and then they went there. His rehab took a lot of time. आई थिंक वो एक जो ग्रिड और डिटर्मिनेशन जो एक ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें हम अपने आप सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ बाद में लोग बताते हैं तब सीखते हैं. पर उस समय आई थिंक कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो आज की डेट में तो है इंडिया में, तब नहीं था. सो एक तो उसके बाद एक्सेप्टेंस भी टाइम लगाती है. डिसेबिलिटी को इमीडिएटली या कुछ टाइम तक हमें एक्सेप्ट अगर ना करें तो हम डिनाइल मोड में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं. सो ये रिहेबिलिटेशन का जो एस्पेक्ट जो आपने रिसर्च किया और फिर नीना फाउंडेशन के के को आपने एस्टेब्लिश करते हुए जो फैसिलिटीज, जो सपोर्ट ग्रुप और जो चीजें मैनेज करने में आज आप हेल्प कर रहे हैं ना, दिस इज कमेंडेबल. मुझे याद है जब हम क्लोस्टमी के लिए बहुत जगहों से सलाह कर रहे थे कि कहाँ से हम करवाएं, तो स्पोक विद यू. एंड जो आपने गाइडेंस दी थी वो काफी हमारे काम आई, और चीजें आगे बढ़ी भी हैं उसके बाद में इन पॉजिटिव डायरेक्शन. सो मैं कोलोस्टमी के बारे में कभी और बात करूंगी किसी और वीडियो में आपके साथ में, क्योंकि जिस तरीके से अतुल को फायदा हुआ है कोलोस्टमी कराने के बाद, क्योंकि उनकी एक फुल टाइम जॉब के साथ में बहुत सारी चीजें वो नहीं मैनेज कर पा रहे थे. सो काफी उनको बेनिफिट हुआ है कोलोस्टमी के बाद, ऑल्दो एक लाइफ चेंज हुई है. बट हम बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी चाहिए कोलोस्टमी के बारे में. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुझे आप सबसे बात करनी है मेरे हस्बैंड की व्हील चेयर के बारे में. अतुल एक व्हीलचेयर यूजर हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर यूज करते हैं. रिसेंटली उन्होंने ईवॉक्स की व्हीलचेयर खरीदी है जो कि रिमोट से भी ऑपरेट होती है. वो रिमोट के द्वारा ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाती है और खुल भी जाती है. मैंने उसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया जो कि इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगा. अगर आपका मन बनता है उस वीडियो को देखने के बाद व्हील चेयर लेने का, तो मुझे इस नंबर पे फोन करिए और मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स के लिए.
ईवॉक्स के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और अब चलते हैं आज के गेस्ट के पास में और कंटिन्यू करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन ऑन इंडिपेंडेंट लिविंग विद द डिसेबिलिटी। आपको first of all salute to you, Anita. थैंक Honestly, because spinal cord injury to me in India is हम वो bottom of the pyramid की जो बात करते हैं ना, right? हाँ, सी के प्रहलाद, यू। bestseller. Bottom of the pyramid, it's not only people who are below poverty line. मैं मेरा मैनेजमेंट ज्ञान फर्दर यूज करना चाहती हूँ. People with spinal cord injury with this health condition are at the edge of the bottom of the pyramid line. वो जो ट्रायंगल का जो लाइन है वहां पर इतने हम दबे हुए हैं, इतना हमारा वॉइसेस दबा हुआ है, इतनी जरूरतें हमारी नहीं अनमेट है. Another salute to you, dear, that आप you know, where does that fearlessness come from? To accept a life partner knowing that ना ही आपको डिसेबिलिटी है, लेकिन अतुल को एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, और जैसे हमने बताया रिहैबिलिटेशन इज अ जर्नी. Constantly we have to move towards a better quality of life. तो ये जो आप कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट योर ट्राइब टू इंक्रीज, बिकॉज नीना फाउंडेशन का यही एक मकसद है कि एक एक्सेप्टेंस आए फॉर पीपल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स. आपको एक बात बताना चाहूंगी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो चैलेंजेस हैं मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ रही थी, है ना, क्योंकि मैंने इंटरेक्शंस, मेरी भी थीसिस डिसेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक के ऊपर ही रही है. सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्योंकि मुझे शुरू में लगता था कि डिसेबिलिटी एक बहुत जेनरिक चीज है, और हमें जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को पोलियो हो गया था जब मैं 6 महीने की थी. सो मेरा एक अपना परसेप्शन था. लेकिन जब मैं और लोगों से मिली, वो मेरा परसेप्शन या मिथ्स कह ले, वो अपने आप ब्रेक होने लगे. और जब मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कंडीशंस में बहुत सारे लोगों से जब मैं मिली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि चीजें बहुत डिफरेंट हैं. सो इट वाज नॉट अबाउट मी एक्सेप्टिंग अतुल, इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर विद आवर ओन यू नो प्री कंसीव नोशंस. सो अतुल के Yeah. साथ रहने के बाद में वो कुछ चीजें, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत लंबे सालों से है, सो हम एक दूसरे को बहुत कुछ चीजें सिखाए हैं. और जब शादी हुई उसके बाद में ये डिसीजन लेना था हमें कि क्लोस्टमी करवाएं या नहीं करवाएं, तब रियलाइज हुआ कि जब दो जने साथ होते हैं ना, सेम माइंडसेट के, तो डिसीजन लेना भी इजी होता है. और लाइफ को ऐसा मान के चलते हैं कि एक ही जिंदगी है, अगर ये करार लेने से सुविधाएं आगे के लिए हो जाती हैं, तो लेट्स डू इट. सो ऐसा हमने डिसीजन एक म्यूचुअल डिस्कशन के साथ में लिया. और शादी तो इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक, मैनेजिंग लाइफ विद हैप्पीनेस. सो हम दोनों अभी वो कर रहे हैं, आई गेस. तो एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से है मैम. सो मैंने अकेले ने नहीं एक्सेप्ट आपका किया. फेवरेट डुएट सॉन्ग कौन सा है? हमारे बहुत सारे, अतुल इज अ वेरी गुड सिंगर. Oh, really? Oh, यस. wow. So सो tell me one. Tell me one duet song that both of you like to sing together. ओके, सो हम लोग गाना गाते हैं, आते जाते हंसते गाते, जो मैंने प्यार किया का गाना है ना. इट्स हाँ. सॉन्ग इज अतुल्स फेवरेट सॉन्ग. एंड देयर आर कपल ऑफ मोर. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. Oh, yeah. Beautiful song. Lovely. इज अ Yes. वंडरफुल सिंगर, यू शुड. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें रोज आप ना रूटीन की डालते जाएं. सो हाँ. इंस्टाग्राम पे मैं अतुल के साथ ही, वो एक बहुत ही ना कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर ऐड करते हैं. तो जब ह्यूमर ऐड होता है ना, तो वो लाइट हो जाती है सारी. तो सब Correct. हो सकता है उनके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही हो, बट देख के ऐसे लगता है कि ये इंसान हर माहौल को लाइट बना देता है. जोक्स बहुत क्रैक करते हैं, गाने बहुत गाते हैं, खाना बहुत हाँ. पसंद है. तो हमारी कुछ चीजें कॉमन है. और आई एम अ बैड सिंगर बट आई स्टिल सिंग विद हिम, ताकि हम just to participate in this particular That is what is journey. important. Yeah. To flow together, and enjoy together.
It's Yeah. fantastic. In fact, while you were speaking about rehabilitation, um, uh, I have been fortunate to visit two world-class rehab centers. Not for rehab. My rehab has happened in Mumbai itself. हम्म, I'm a die-hard Mumbaiker. I'm a very patriotic Indian. मेरे डॉक्टर से बोला आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप you go abroad. So Dr. Jacob, I had an amazing team, and I think that is the reason I'm spirited still and I take up every challenge at 62. I'm 62 years old. You And don't look like you don't look like 62. yes, I am. Yes, I am. I think wo daily, physiotherapy has become so much a part of our हाँ, routine, and I think that fitness is so much part of a routine, and to be active. I think this is an advantage of living with a incurable, permanent, irreversible spinal cord injury. Positive भी तो होते हैं. हाँ, तो wherever my brother यूरोप में मैं सिर्फ एक ही जगह पे गई हूँ. And 2013, my brother decided to take the family to Switzerland. First day, first thing, guess what I do? क्या? I tugged my brother and my nephew out, and we go and visit the only 7-star spinal cord injury rehab center in the world, which is called the Swiss Paraplegic Center at Northville. Can you imagine an entire village? It's just the rehab center. हम्म, And thanks once again to Dr. Chabra. I do a lot of pre-work, and I told him I wish to. He has friends everywhere. He's such a wonderful human being and such a kind human being and a doctor, workaholic like us. And he connected and I visited. Oh my God. It is a center where each and every need is taken care of. How to wear shoes. मुझे किसी ने नहीं बताया. I still wear my calipers. So when I go for the marathon, I change my shoes, when I sit on the wheelchair. That you have to buy a shoe size which is one size bigger, and you have to tie it loose. If it is very cold, wear woolen socks. And how to even quadriplegics, independent living, sports, हम्म, swimming, hydrotherapy, hoist lift, everything was there. And the second हम्म, center I visited was in the US, in Chicago. Again, the first thing I did when I went on a holiday was visit Shirley Ryan Ability Center. okay. And the value of a human life is noticed with the rehab that they provide. हम्म, you know, and we don't have it here. Maybe whatever campaigning we are doing will happen in the future, but the reason I'm saying is that colostomy to happen after 97 to 2022. Correct? You got it, Atul got it done in 2022. It's been a journey. हम्म, Out there is a physiatrist, a rehab specialist. You go to one. In our OPD, we have a multidisciplinary team of doctors. हम्म, यूरोलॉजी के लिए अलग, ऑर्थोटिस्ट के लिए अलग, स्पाइन के लिए अलग, रेस्पिरेटरी के लिए अलग, स्किन के लिए अलग. अगर बेड सोर प्रेशर सोर हुआ है, हम्म, arthritis हुआ है, because old age related problems, spondylosis, all that is part of life. yeah. So I think हम्म, even despite that, yeah, you want to ask me something else. You also asked me about post my PhD, but you just yeah. ask me your questions now. I think, yeah, so rehabilitation is something which is also, we also look for such kind of solutions. So मैंने अभी recently आपके वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो करी थी जो कि थी अनूप चंद्रन की और नेहल ठक्कर की, as as on 14th February, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे और हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे सेम डिसेबिलिटी के लोग और स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग कैसे आपस में रिलेशनशिप में आ सकते हैं. सो उन्होंने मुझे बताया था कि वो आपके इवेंट पे मिले
आपके 2-3 जो इवेंट्स है उसमें वो मिले हैं, और उसके बाद उनका एक कमिटेड लाइफ स्टार्ट हुआ. सो thanks to you, because it's not only about rehabilitation, you are also making people meet, and then such meetings are helping them to find partners. Do you know, they are an adorable couple. They Yeah. are an adorable couple. हाँ. And we have seen them, like नेहल तो बच्ची थी, उसकी मम्मी बात करती थी मेरे साथ तभी तो. And Anup was there, very close, they have been earliest. But I'm so happy. Rehabilitation में over the years, ये हम्म. जो मेरे PhD में नहीं था, लेकिन I read a book and I reviewed a book by Air Commando Nitin Sathe हम्म. called, it's titled Born to Fly. And I हम्म. would really recommend you and Atul to read this book because I'm sure you all like reading. And this book is about Air Force pilot um MP Kumar, हम्म. and he had a road accident, a very freaky. And in his book, when I read that book, and then he's a friend now, Nitin Sathe, he's been part of our Narratives of Courage coffee table book also, which has just been published. We worked during we were very busy in 2021. We हाँ. were immersed in bringing out this coffee table book. In fact, I have a copy right here, but it will be a mirrored image, is it? I can see that. You can see it? हाँ. And you must see the cover page designed by Curator Young. Oh, I that's have something. actually seen this book. I remember you mentioned about this book in your posts on Facebook, and I've seen that. हाँ. Yeah. हाँ. So, in that, love comes out as a very significant component of what made MP Anil Kumar to fight back, हम्म. because he fell in love with his nurse. हम्म. And they were both very much in love, but for some reason, MP said that, you carry on. And, because the quadriplegic, I have actually met him at PRC. He's no more. He had cancer and he expired. But what Sorry a, to hear that. sorry? Very sorry to hear that. Yeah, years ago. But this book, in rehabilitation, love is the most important ingredient, whether it is love of a parent, whether it is love of a sister. Like I say, Nina Foundation is all about, Your she's sister. in my heart. And uh, I told Nitin Sathe, and I think it's very important to give a feedback of something new, because in research, in the journey of life, we come across new things. And I said, this is the biggest ingredient. Hmm. Love can make life so much happier. And when you are happy, you release positive hormones, and you can do everything. You feel you can do everything. And that's what life is all about. That's what rehabilitation is about. True, true. And let's move beyond disability. I've seen that you have also written a book called Nano Thoughts on Management. ओके, लेट्स कम बैक टू मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद में आपने ये सब भी किया है. और आई कांट सी मैम, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर वो फोटो लगा दूंगी लेके ना. ठीक है. हाँ. हाँ, हाँ. मैं वहाँ पे लगा दूंगी, ताकि हाँ. दिस बुक इज अबाउट नैनो थॉट्स ऑन मैनेजमेंट. आई एम श्योर ये अमेजोन पे अवेलेबल है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में. Nahi, this I published way back in 2008. अच्छा. And it's only a print copy. I keep thinking I need to scan this and make it digital and upload it on a website and make it हाँ. freely available. These are all the editorials I wrote हाँ. after my accident. ओके. And my mentor, Dr. Athria, said, why don't you? They are nano. Even before, actually, Tata should have given me a royalty, right? Even before the nano car was launched, I already had a name called Nano Thoughts, because मेरा मानना है कि मैं जो भी शुरुआत करूँ N से करूँ. हाँ. We are women, हाँ. India का N.
तो हाँ, nanotechs and management was the first book. ओके ओके। एंड अभी आप और कौन से प्रोजेक्ट्स पे हैं, काम कर रहे हैं मैम? uh, our ongoing is a project Nirman, जो भी absolutely underprivileged, resource poor, remote areas में रहते हैं, उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना। यहाँ बैठे हमारी टीम जो है, राजश्री पाटिल जो खुद एक रूरल एरिया में रहती है, ऑरेंजेस के ऑर्चार्ड के आसपास, वो एक बहुत ही सशक्त महिला है, एंड शी इज पार्ट ऑफ अ वेरी एक्टिव टीम। भावना छेड़ा जो क्वाड्रिप्लेजिक है, एक थंब से सब काम करती है, बट व्हाट अ ब्रेन, her mathematics and her memory is amazing. So she participates. We have a Yusuf Bhai who does home-based rehabilitation. Uh, जाते हैं और वीडियो पे सब कुछ सिखाते हैं, वेदर ग्रेड 4 बेड सोर हो, वेदर कोई एक्सरसाइज करानी हो, सब हम करते हैं। और एक है हमारी निकिता वालेचा, ये हमारी एक्टिव टीम है। And then for programs and other things, we have another team. And I'm the kind of person, आपने जैसे बोला कि it's a lonesome journey to do a PhD. Nah, I involve everyone. मेरे बिल्डिंग के सब बच्चे, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मेरे कॉलेज के सब इन्वॉल्व थे, फैकल्टी बोलो जो भी बोलो। Of course, now I've retired, but I believe in how do we spread awareness, you know? So just involve everyone, and that's how they know about spinal cord injury. या आई थिंक ये एक ना मोटो होगा आपका कि सबको इन्वॉल्व करते हुए वो अवेयरनेस क्रिएट करना, प्लस लोगों की लाइफ को चेंज करना फॉर गुड। Yes. And I think it's so much possible. हाँ मेरे PhD में gap analysis थे। हाँ। What are the gaps? Rehabilitation कभी कैसे कहाँ होना है, और the given thing was that you should have a world-class comprehensive spinal cord brick and mortar spinal cord injury rehab center. We tried and we tried, and we have the who's who as a trustee board, right? Whoever was, it's actually have been has been a sharing journey. जो भी मेरे डॉक्टर्स रहे हैं, मैंने उनको बोला अभी हम ये फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, और उनके उसके पहले भी घर में मीटिंग्स होती रहती थी। मैं ब्रेस पे बैठती थी, नीचे से ऊपर बोलती थी बाहर बैठो, एंड फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उड़ी मारना सिखाया था, all those things. I mean, I have seen the struggle. My brother-in-law, Hemubai, has carried me on his shoulders when we came back from hospital. Because वो व्हीलचेयर का कोई काम ही नहीं था वहां पर, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सीढ़ी ऊपर जाना नीचे आना वगैरह, तो वो तो सीखना ही था। एंड डॉक्टर जेकब, डॉक्टर प्रधान ने मिलजुल के एक आइडिया बनाया और बोलते चलो अभी ये जमूरे को सिखाते हैं उड़ी मारना। और आई वॉज गेम। आपने बोला एडवेंचर, एडवेंचर बिगिंस एट होम, एंड बिकॉज आई लर्न, there were so many others. And as you know that community washrooms होते हैं slum areas में और rural areas में, और वो bathing wash बावल के लिए भी नहीं जा सकते, और प्लस इंडियन washrooms होते हैं। It's such a big revelation, Anita, that हमारे, और मैं ना बहुत ही रिसर्च करती हूँ। जब भी मैं एक फोन कॉल करती हूँ, वो हमारे फ्रेंड के साथ सब कुछ पूछ लेती हूँ, सब कुछ पूछ लेती हूँ। उनको पता भी नहीं चलता है कि ये रिसर्च हो गया है। And it is important. And then I use that for forums like Spine 20, which is a global forum, which I have been privileged to be part of. And it is so shocking. There are no chemist stores. There is no, buses which reach those remote areas, but there are alcohol stores. There are alcohol stores. वहां पर कोमोड चेयर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये मिलेगा,
So I make it a point, if the distribution, this is a management thinking, if the distribution can go to the remotest part, why cannot health, which is the paramount priority for any citizen, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है health for all, why not? ट्रू, आई गेट इट। ओके, सो मुझे बताएं, आप ये सब करने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। ओके, और साइलेंस, आई ऑल्सो बिलीव इन साइलेंस। अभी आपसे बात कर रही हूँ, फिर मैं फोन कॉल्स नहीं करूंगी, देन आई विल बी लाइक आई विल कंजर्व दैट एनर्जी। हाँ हाँ, yes, to me sunlight, बॉम्बे में हमें सब जगह सनलाइट नहीं मिलती है, तो आई गो फॉर आउटडोर थेरेपी एंड आई ट्राई टू टेक सनलाइट as much as possible. I think the five elements give us the energy. ओके। और आपकी, मेरे को बातें सुन के लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ओह, खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। वंस इन अ वाइल आई ऑल्सो इंडल्ज। घर पे सब हाँ, देखते रहते हैं ये क्या खा रही है। आई हैव ओनली 3 meals, and I have a regular meal, but if there is something which I'll enjoy once in a while, I ओके, indulge. आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा खाने में? No, don't ask me. फिर भी बता All the दीजिए, wrong चुपके से things. बता दीजिए, And चुपके I'm से। supposed to be a peer mentor. So ये चुपके ये से वो बता लोग भी दीजिए। खाने लग जाएंगे। ओके, सो मैं सीक्रेटली आपसे फिर बाद में पूछूंगी कि आपको क्या पसंद है खाने में। आपको बता दूंगी मैं। हाँ, सो आपको मुझे मैं आपको वहां पे, जब मैं कभी बॉम्बे आऊंगी तो मैं जरूर चंडीगढ़ से लेके आऊंगी आपके लिए। Definitely, and I will invite you also. You can have it here with us. डन डन। जब भी नेक्स्ट पक्का मैं आपसे मिलने वाली हूँ। सो Please. मुझे कुछ एक चीजें और पूछनी है आपसे, कि जब, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट लिविंग विद अ डिसेबिलिटी के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक इंडिपेंडेंस इज फॉर यू? To move out of my comfort zone. Okay. Uh, to keep doing new experiences which I've never done before. This Sunday, I went for my first heritage tree walk on my wheelchair. ओके। And it was so wonderful to be outdoors on a Sunday when the streets are, absolutely to yourself. They were, a mixed audience. I took 2 kids with me from my building, and I involved my driver also, ki aap bhi chaliye. And, it's such a discovery, a tree of heaven in a Mumbai University campus in full bloom. Oh my God. I love these experiences. I love meeting new people. I think a lot of people have these preconceptions about people, people like us who are on wheelchairs, women like us who are senior citizens and on wheelchairs. And it's lovely to explore our world, wherever. I mean, wherever. So, yes, for me, independence is जो कभी पहले नहीं किया है वो करो. So that's, in fact, for our first. So we have also, Nina Foundation has got a lot of firsts to our name. And I ideated about, besides the first helpline, about a spinal cord injury awareness day. So it was in 2009. And one of our friends, Hardik, said, maybe you know Hardik, he's from Mumbai. He also had a paragliding um, crash landing. And he said, Didi, everyone calls me Didi. I said, Didi, let's do a dance. हाँ, We involved Shamak Davar's Victory Arts Foundation. They coached us. And at Arvind Prabhu, Arvind is a friend of ours with the quadriplegia who has a Prabandhan Thackeray gym and with a hall and all. So we used to practice there. And we danced on Chak Day. We were uh, 12 of us, all of us. Dinkle, who recently got married, was a bachi. And we all danced to that, and we danced to I'm Alive. So ओके। it was so dancing, all these things which were never thought of. And you could have seen the vibe. There was 600 audience, on the rooftop of our college, and raining out there.
and everyone joined in. I think that was a way to break that barrier about people on wheelchairs, to introduce, that was a debut of friends with spinal cord injury. हाँ, मेरा एक्चुअली यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सा मिसकंसेप्शन है जो आप ब्रेक कर पाई हैं अभी। बहुत सारे हाँ, लिस्ट बताइए। Yeah, that people with spinal cord injury cannot do PhDs or cannot go and do things that you can travel independently, that you can convince and like I remember I had one uh, family coming to me saying that his tree branch fell on him. हम्म, And the parents kept saying that ये तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ sorrowful हिंदी गाने सुनता रहता है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको छोड़ दिया है after the spinal cord injury. हम्म, And I was motivating and I'm counseling the family and the youngster. And then, you know what the mother said? तू तो लड़का है, ये देखिए, शी इज, ये मैम एक औरत होके कितनी सारी चीजें करती है, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए. And actually, I never realized हम्म, that such we are so used to being educated and being in the city of Mumbai and doing all this. And yeah, so I mean, the very fact that in the rural areas, लोग स्पोर्ट्स में आ गए हैं, घूमने लगे हैं, हम्म, अच्छे कपड़े पहन के शादियों में जाने लग गए हैं, रिलीजियस फंक्शंस में उनको लेकर जाते हैं. देयर इज नथिंग लाइक बैरियर्स. हम्म, I think what Nina Foundation does is give hope, हम्म, hope to live, that the life is out there for us to enjoy and make you confident. हम्म। Once you're confident, the world is ours. Uh, Whatever you wish to do, you can do. या दैट्स ट्रू। एंड आई बिलीव कि आपका जो फेवरेट कोई कोटेशन भी होगा तो वो इसी को ही ब्रेकिंग बैरियर्स से रिलेटेड ही होगा। सो वुड यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट कोटेशन? My favorite quote is actually again from a book, um, Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach. ये हाँ। सभी लैंग्वेज में है और I am going to read this. I'm going to read it because it's a wonderful quote from the book of Richard Bach. Have you read it? You will have it in your library for sure. हम्म, Flying is seen as a way of thinking. So Jonathan Living Seagull is it's an analogy. Everything is, the book is about, they talk about a seagull, and a seagull can just reach up to a point. हम्म, And सभी उस बोलते हैं तू तो बच्चा है, तू यहाँ तक ही फ्लाई कर सकता है. हम्म, एंड जॉनथन लिविंगस्टन सीगल सोचता है, एंड देन उसकी जो डिस्कवरी है ये बुक में है. Flying is seen as a way of thinking. You have to think of yourself as a creature of total freedom. You have to think you are free from all rules in your mind where it all happens. Now you can fly at the speed of your mind, unlimited. हम्म, हम्म, And he breaks all barriers and flies and flies and flies and flies and reaches a point where no other seagull has been before. वाओ। This is so true for all of us. हाँ, अगर मैं मेरे माइंड में सोचती हूँ कि मैं फ्री हूँ, मुझे अगर कोई बताता है, मेरे पिताजी बताते हैं ये नहीं कर सकती तुम, कि ये नहीं हो सकता है, हम्म, you just go beyond that. हम्म, you know we have हम खुद की लक्ष्मण रेखाएं क्रिएट की है, वो हम्म, अगर हम पार कर लेते हैं तो
you can soar. And honestly, we ourselves don't know what our limits are. सो आपके जो फाउंडेशन है उसमें आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिला है जिसने इस पर्टिकुलर चीज जो आप सीगल के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कोई सीगल मिला है आपको? बहुत सारे, मेरे लिए तो मेरे सब बच्चे हैं, और एवरी वन इन देयर ओन स्पेस। एक जो आ जाता है ना कॉन्फिडेंस, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हमने ये किया है। हाँ। हमने मल्टीपल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक्टिव एक्टिव रिहैबिलिटेशन मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम वहां पर होता है आईएसआईसी में। तो राजीव विराट को बोला आप यहाँ आ जाइए और हम पूरे दिन का एक्टिव रिहैब करेंगे। ओ माय गॉड, people in Mumbai didn't know which wheelchair. They didn't know there was something like an active wheelchair. They didn't know कि हम व्हीलचेयर से सीढ़ियां उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, how to transfer in a vehicle, how to transfer, because sadly, Anita, occupation therapy, जो ये सब एक्टिविटीज ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, डेली लिविंग हम्म। सिखाते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं। हम्म। दैट इज वाई नीना फाउंडेशन और अदर्स, जो हमने बोला कि भले हमारे पास सेंटर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक कनेक्शन है कि हम ये करा सकते हैं। और आई इनवाइटेड ऑल occupation therapist students and the faculty, all physiotherapist students and the faculty, फ्री में सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड फ्रेंड्स को बुलाया। बताओ तो फॉर मी दैट इज ऑलिवर डिसूजा। हम्म। उसका फोटो आप देखिए, वो एक्टिव सेमिनार में ऐसे से बैठा है, एक बड़ी सी हॉस्पिटल व्हीलचेयर में। ओके, टुडे ही इज डूइंग हिज पीएचडी in a college in New Zealand. He, वाह। he has traveled there and he's done this. He's living हाँ। by himself and he's doing it. So I think this is one example of someone who has, decided that I will do something. Otherwise, he was completely shattered. And I remember I had got a distress call when, his caretaker called up saying that, his urethra has burst and he's bleeding continuously. And our Dr. Sagri, who's a urologist, we have such a divine team, all absolutely free of cost. We give absolute world-class service free of cost. हम्म। Hame, we just want that person to get going. And I think these are those barriers which pull you back. And, he was completely restored, rejuvenated. And after that, he learned everything. And then he decided that life is for many more things. सो आई गेस ये वाला पार्ट जो है ना, मेरा टैगलाइन होगा, लाइफ इज मेनी फॉर मेनी मोर थिंग्स। सो आई गेस मैं कि लाइफ ना बहुत कुछ है, सिर्फ डिसेबिलिटी एक एस्पेक्ट है जीवन का, वहां पे वो लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, बहुत कुछ है। और आपके इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन ने उस कॉन्वर्सेशन को जो मैं करना चाहती हूँ आगे आने वाले पॉडकास्ट में, उसमें बहुत बड़ी हेल्प करी है। कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और अगर लगता है कि लाइफ रुक गई है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपने अभी बताए हैं, आपकी अपनी लाइफ एक एग्जाम्पल है, मेरे हस्बैंड की लाइफ एक एग्जाम्पल है कि लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ सिर्फ बढ़ते रहने का नाम है। और आपका जो नीना फाउंडेशन है वो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और मैं और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँ, हाँ क्योंकि जी। आई एम एट द इंटरसेक्शन ऑफ एकेडमिक्स, मैनेजमेंट, author, writer, editor, and coming from the space of media. I think the media has a huge role to play. And हम्म। recently I came across a wonderful journalist called Maua Das, who's with the Times of India. And she actually spent 3 hours with me to understand about spinal cord injury. हम्म। And she concurred with our advocacy. Again, this is something that I have been trying to canvas and tom
and through your channel on my own, I would like this to, reach the portals of the government and who's who. मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि if spinal cord injury is a distinct disability in the Rights of People with Disability Act, okay, the 22nd disability becomes spinal cord injury. This landscape और जो स्ट्रगल है, जो एनजीओ की स्ट्रगल है, वो सब थोड़ी रिलीफ हो जाएगी, True. बिकॉज एक पॉलिसी आ जाएगा. कॉम्पेंसेशन किसी को नहीं मिलता. 80% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है. हमारे पास 10 साल के बाद, 12 साल के बाद पेशेंट्स आते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया और ग्रेड 4 बेड सोर्स से बैठे, यानी कि वो हॉस्पिटल से सर्जरी हो जाती है. Hmm. उसके बाद उनको ना इंफॉर्मेशन, ना एजुकेशन, ना एम्पावरमेंट, ना रिहैबिलिटेशन के बारे में, ना फिजियोथेरेपी के बारे में. Hmm. तो आई थिंक ये एडवोकेसी जो मेरे दिमाग में जो इतनी आइडियाज होती है और फिर मैं कैंपेनिंग शुरुआत करती हूँ 2012 से कर रहे हैं. एंड Hmm. वन वर्ल्ड जो मेरा हमारा पब्लिकेशन है, इट इज द ओनली publication for spinal cord injury for the community, across. And इसमें भी हम बताते जाते हैं. हमने 15th अगस्त को लास्ट ईयर 75 years of our Independence Day. When you're talking about independence for us, it comes with the Independence Day, right? सभी ने ये बात बताई है और वो लिंक भी मैं आपको भेजूंगी. कहाँ पर भी आप along with your forum you can So I communicate. think ये जो डिस्क्रिप्शन में ना नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, I'll put that link in the description box so that people can go read it, Yes. and explore more what you are saying. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, so it's very important that ye spinal cord injury becomes a 22nd disability, and there is scope. When they expanded from 7 to 21, Hmm. they did say that we can increase more, Yeah. and why not? When multiple sclerosis is, when muscular dystrophy is, why not? हमारा जब UDID कार्ड आता है, Hmm. हमें ऑर्थोपेडिक डिसेबल बोलते हैं. अभी हमारा सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स नहीं है, लिम्स नहीं है, ब्लैडर, बावल, स्किन, रेस्पिरेशन, मोबिलिटी, सब कुछ अफेक्टेड है. Hmm. स्किन. So we are just not orthopedic. So medically we also it is wrong. If a orthopedic doctor is evaluating us and saying that we are this, it's wrong. If they say we are neurological, that also. We are a separate, an American with Disability Act जिससे हमारा इंडियन लॉ बना है. जावेद अबीदी के साथ हमने काम किया है. आई नो, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव been with all the disability leaders of our country, whether it's the Javed Abidi of Hmm. NCPP, whether it's Dr. Mithu Allur of ADAPT, whether it is Jayashri Ravindran of Ability Foundation, or a Shruti Mahapatra of Hmm. Swabiman. They are all disability leaders. एंड आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपके चैनल से भी कहीं नरेंद्र मोदी जी को के अपने हेल्थ केयर सेक्टर को पहुंचा दी जाए, इट विल बी लाइक. ऑलवेज ट्राई मैम. ये जो एक एक होती है ना गूंज की आवाज, तो हम मल्टीपल गूंज अगर अलग अलग जगहों से बजाएंगे, कोई आवाज क्रिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगी फाइनली डिसीजन और मेकर. वो भी तो विमेन की आवाज, विमेन हाँ. विद डिसेबिलिटीज की आवाज. हाँ. 2024 विच इज द एरा ऑफ विमेन. हाँ, so आपको मैं बताती हूँ. मैंने गाड़ी सिखाई अभी डॉक्टर इंशा बशीर को, जो कि, हाँ, हाँ, कश्मीर. कश्मीर से. फिर मैंने गाड़ी सिखाई अवनी लेखरा को. सो दोनों स्पोर्ट्स में उनसे जब मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है हमारे लेडीज के अंदर इंडिया में. और अलग अलग, क्योंकि अवनी राजस्थान से है, इंशा कश्मीर से है. तो आप देखिए जो बहुत ज्यादा माइंडसेट में पिछड़े हुए राज्य हैं, उनसे अगर आ रही हैं लड़कियां आगे, स्पोर्ट्स खेल रही हैं. सो डिसेबिलिटी किसी को नहीं रोक पाती. मुझे लगता है कि वो एक बहती नदी सी है कि बस एक 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 एक
पत्थर आया उसके बीच में, लेकिन हम बहेंगे, हम जाएंगे, हमारा हमारा उद्देश्य है समंदर बनना। तो Yeah. शायद हम उसी। And the purpose of the river is to flow, not to stay in one place. Correct? So I think the women uh, are leading, and I think it's such a wonderful thing that you're doing, empowering in real time women to drive and be free. Thank you so Wonderful. much, ma'am. And I think we all are together in this journey. So if I can contribute in anything, just let me know. I am all for you. Let's organize a rally, Nina Foundation Women's Oh, Rally. done. And the Next year, guys will be the navigator. We'll all be driving modified cars. Yeah, yes, yes. let's So Nina एक bucket Foundation list भी and करते हैं. yes, Nina Foundation and Drive on My Own Foundation collaborating together to have a rally for spinal cord injury awareness. Yes, wonderful. You already have the theme. Yeah, because that is something which is very close to my heart. So So उसके पहले तो मुझे सिखानी पड़ेगी. सिखा दूंगी। मेरा ये सवाल था कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, तो Before my accident, I used to drive and I love to drive. so But after my accident, uh, I don't drive. I have the luxury of having someone to drive me okay. So around. anyways, if you that's very good that you have somebody to take you around. But now it's my responsibility to go back to your driving days. Yes. You have to sit in the driving seat, and then I guess you are good to go. You're going to take control of your life once again in terms of driving. Oh, thank you so much, Anita. I will really appreciate this gesture by you. And like I told you, I don't do things all by myself. मेरे साथ एक पूरा फोर्स आता है, तो बहुत सारे भी सीखेंगे और हाँ, हम. तो मैं एक कैंप लगाऊंगी पूरा, जहाँ पे हम गाड़ी सिखाने का कार्यक्रम नीना फाउंडेशन एंड ड्राइव ऑन माई फाउंडेशन का भी रखेंगे यस, इन मुंबई. मुंबई। ग्रेट ग्रेट. और हाँ, हम रूरल एरिया से भी लेकर आएंगे सबको. अब जहाँ से भी लेके आए मैम, हमारा काम है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने का मोबिलिटी के अंदर। ठीक है, let's work out. You were asking me what's the next project, so this is the next Next project. project. So today, I guess on this particular day, we are ready to roll another project, and then Yeah. we are all set to. See Uh, how action oriented we are, right? we are certainly, certainly. So thank you so much, ma'am. It was such a pleasure Thank to you, speak with thank you, you. thank you. And my responsibility is now to make you learn to drive, and many others who are interested in learning to drive. I'm all in for it. It's a wonderful thing because I know driving is something which makes you free and it takes you wherever you wish to go. Yes. Thank you so much, Wonderful. ma'am. Thank you so much. Thank you, God ma'am. bless you. Bye. And Bye. I love your yellow happy color. Thank you. And thank you for complimenting with our combinations like blue color, your dress, your background. And you know something? Yellow and blue, if you see the symbol of disability, it is yellow and blue. So I think that's the logo what I have because it's more towards dark blue and yellow, if you see that. I can see a black here. NMYWN is black. So it's dark blue. Okay, in my laptop, I can see it as black. Okay. Okay. Yeah, it matches with your outfit. Okay. So I think we are fashion fiestas as well, so match everything. Of course. Okay, ma'am. Thank you so much, and you have a great evening ahead. We'll see Yeah, you and around. my blessings and love to you and Atul, and God bless you with your channel and your podcast on my own. May you reach the sky. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye.